myself Professor Navaneeta Rath. I teach sociology at Utkal University, and today I am going to give again an introduction part 2 to the lecture we had yesterday. In this part 2, I will be talking to you that what are being ingrained in this particular module. I will give a short introduction to each of them. Let us start today's class. As we know that the human life cycle, each human being passes through a particular life cycle. प्रत्येक मनीष गोटे जीवन चक्र दे गति करे and that is known as and it comprises of different stages. यह विभिन्न स्तर रे विभक्त. The first a child passes through what is called the prenatal stage, where he or she is in the mother's womb. प्रथमे कौन हुए गोटे शिशु मातृ गर्भरु तार प्रकृतर से जीवन आरंभ करि थाए एंड दैट इज कॉल्ड द प्रीनैटल स्टेट. जेते बेले कि से गर्भरे तार प्रथम अभिवृद्धि घटी थाए. देन ही कम्स टू द सेकेंड स्टेज दैट इज कॉल्ड इन्फेंसी बा शिशुत्व जोटा को आमे कहू ताको शैशव सेठिकी आसे. द थर्ड इज अगेन childhood, जोटा कि से शैशवर एक extension, that is an extension of your infancy, and the child becomes little elder and he comes with interaction with a larger circle. Then comes the fourth stage, that is the adolescent stage, jaubana prapta hue, and during the adolescent stage the child's world actually increases. He comes to a larger social circle. Then comes the reproductive stage. It is only meant for the female who actually bear, and men also help in the reproduction process. And the last one is the old age, जेतेबेले कि प्रौढ़त्व प्राप्त हुए. Similarly, a woman who is born into this society also passes through this life cycle. प्रत्येक नारी ए जीवन चक्र रे से गति करि थाए एवं जीवन चक्र रो विभिन्न स्तर देई से अनेक समय रे सब बेले जाई थाए एवं प्रत्येक स्तर रे आमे जदि देखिबा आमे अनुभव करिबा एवं चिंता करिबा चलंतु नारीटीए पुरुष संगरे समान सुजोग एवं समान अधिकार पाई थाए कि जहाँ से तार इन्फेंसी, तार प्रीनैटल स्टेज, तार इन्फेंसी, तार चाइल्डहुड, तार रिप्रोडक्टिव एज एवं एल्डरली स्टेज रे does she enjoy the same privileges as men? Actually, there are few women who have enjoy almost absolute equality with their male counterpart, but still there are a majority of the women who find life different for them from their male counterparts at each stage of this life. And particularly the biological difference between men and women make women lead a different life in each of these stages, because there are some physical differences between men and women. We treat them differently in the society. But now the question comes, should we really treat them differently? आमे तांको ए जो शारीरिक जो डिफरेंस रहिची बा शारीरिक भिन्नता रहिची सेथि पई आमे गोटे नारी एवं पुरुष को अलगा अलगा सामाजिक स्तर रे आमे तांको व्यवहार देखाइबा उचित कि. तेणु आमे ए जो स्टेज गुड़िक आमे कहूचे, तेणु सेथिरे आमे देखिबा प्रकृत रे नारी और पुरुष केते केते डिग्री रे कोन कोन असमानता आमे तांका पाखरे देखू एवं काहेकि एई असमानता देखू, केबे आमे चिंता करिचु कि एई असमानताटा ग्रहणीय किंबा नुहे. Whether this asymmetry between the boys, girls, men, women, elderly men and women is acceptable to us or not. We have to rethink that, and the entire module actually
talks about women's and men's conditions during the entire set and how we treat our women in different stages of this life cycle and whether we should treat them exactly like what we are treating them today. If we talk about ethics and values, आमे एहा केते दूर जुक्ति संगत केते दूर नैतिकता संपन्न बा एहार मूल्यबोध ठीक होछि कि नाही ताहा विचार करिबा. तेणु आजिर we have brought it into our discussion into the classroom so that our younger generations they will be giving their ideas, because as I have told you in my last class, many of our beliefs, many of our ideas, they are actually ingrained in us. Without thinking, we actually accept them. We never challenge them. And knowing that many of them are actually not reasonable and many of them are not actually realistic, and we accept them in the name of customs, in the name of traditions, and we have been socialized to do so. So, in this ethics and values class, we will be discussing how the children, maybe the boys and the girls, men and women have lead different types of life and how their experience become diverse. Both are creatures of God, both have come to this society, both are members of the society. किंतु जदिओ उभय ए समाजर सदस्य अटंती, उभय समाजरे ग्रहण करिसंती, उभय ईश्वरंकर वरदान, तेबे काहेकि तांकर अनुभूति ए समाजरे ए जो लाइफ साइकिल कथा मु कहूची सेथिरे अलग अलग हुए. तारी उपरे आमर आलोचना ए जो वुमेन इश्यूज उपरे जेतेबेले आमे करिबा इंस्टीट्यूशंस एंड प्रैक्टिसेस, वी विल कन्फाइन आवर डिस्कशन, वी विल ब्रिंग many of our daily regular everyday experience into the discussion of our classroom, and we will reflect upon that. आमे तापरे प्रतिफलन करिबा, आमे तापरे आलोचना करिबा, आमे कोन एबे सेमानकु व्यवहार करछे, काहेकि तांकर अनुभूति अलगा हेउची, एहा हेबा उचित कि नुहे, तेणु एथिरे कोन कोन मूल्यबोधर अभाव रहुची ना आमे एहा मूल्यबोध संपन्न ताहार आमर विचार योग्य. And we will allow our young student friends to discuss about them and to think and to give their own opinion whether it is a good practice or not. If they want to change the practice, in what way they solicit the change, they want the change to come over, केमिति परिवर्तन आसीबो, सेथि पई सेमानंकर मध्य सेमाने सुचिंतित मतामत देबे बोली आशा. Many of our customary practices, age-old beliefs, unequal power relations, social institutions like family, marriage, property do not treat men and women equally and boys and girls equally. आमर जदि प्रथा गुड़िए देखिबा, आमर अनेक गुड़िए प्रथा रही जहा कि आमे देखिबा पुओ मानक पाई गोटे प्रथा, झियो मानक पाई गोटे प्रथा. आमर समान प्रथारे आमे समस्त को केबे हेले व्यवहार करूने. There are families have become educated, families have become urbanized, modernization has touched many families which have in the process changing their attitude towards boys and girls. They are gradually adopting an egalitarian attitude for both the sexes, gender groups, sex groups, and there is not much gender discrimination. But still, I want to tell you here that there are many families in the rural pockets, there are many families which are still ignorant and they treat the boys and the girls differently. Not only boys and girls, that is extended to their latter life when they become men and women. Even it doesn't stop there. If when they become old also, they face the same gender based discrimination in this society. So, we have to find केवल आमे देखिबा कहीं आमर बहुत गुड़े पुराना प्रथा रही, अनेक पुराना धारणा रही, एज ओल्ड बिलीफ्स रही. वी हैव गॉट
आउ परिवार रे आमे जदि निजको पचारिबा परिवार रे आमर गोटे बापा आउ मांकर क्षमता समान की there is also power unequal power relation in many of the families. The father is the head of the family. In the name of the head of the family, he has got all the powers and he takes the vital decisions of the family, whereas the mother, who is actually the plays a very significant role in managing the family, she doesn't take the vital decisions of the family. So when we talk about decisions, why we give undue importance to a particular sex group, that is again to be discussed in during the course of our discussion. आमे जेते आगु को बढ़ी बढ़ी चलिबा आमर जो सामाजिक अनुष्ठान गुड़िक रही जेपरिक कि वैवाहिक अनुष्ठान जे विवाह गोटे अनुष्ठान सेमती परिवार गोटे अनुष्ठान परिवार रे आमर कौन कौन चलती माने प्रथा चली एवं से प्रथा गुड़िक केते दूर पुरुष एवं नारी एवं पुओ एवं झियो को समानतार सहित देखुचंती ता उपरे में आलोचना करिबा आमे मध्य आमर दैनंदिन कार्यक्रम प्रणाली रे आमे किपरि सेमान को व्यवहार देखौ ता उपरे मध्य आमे आलोचना करिबा डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स वी विल फाइंड एक्चुअली डिफरेंट एटीट्यूड डिफरेंट बिहेवियर पैटर्न्स ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स क्रिएट जेंडर इनइक्वालिटी इन बहुत समाज रे आमे देखु जे पुओ मानक पई आमे गोटे व्यवहार अलगा हो जाए झियो मानक पई आमर व्यवहारटी अलगा होई थाए कारण कहीं जदि आम बहुत समय मुझे शुणी बस रे जितेबाला आपड़ देखिथे बस रे यात्रा करुवे गोटे आप रूराल ये रोथे जो मैंने ग्रामीण ये देखिए बस टे जो स्टार्ट हुए जदि आग गोटे झीटे चढ़ी जाए सांगे सांगे बस रे कंडक्टर एवं चालक विरक्त हो जाती कहते तू ओह्ल जा आग गोटे पुओ चढ़ी सारे गोटे झील चढ़ तेणु यही जो प्रथा पुओटीए आग चढ़ झीटे चढ़नी कारण से शुभर संतक बोली भावती दे डोंट टेक द गर्ल टू बी ऑस्पिशियस फॉर दैट देयर व्हीकल सो से भावती से दिन पूरा बिजनेस जमा चलबनी तेणु आग झीटी जदि बाई चान्स चढ़ी जाए से प्रिवेंट करती सो दिस इज अ ट्रेडिशन दैट एग्जिस्ट एंड हाउ फार दिस ट्रेडिशन इज ए जस्टिफाएबल ट्रेडिशन दैट वी हैव टू थिंक दैट वी हैव टू डिसाइड दैट we have to discuss in our class and if we want to प्रकृତରେ एमती गोटे नुहे अनेक 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 प्रथा रही आपण देखंतु गोटे परिवार रे जेतेबेले दुईटी पिला थांती पुओटीए थाए झीटीए थाए आमे गुरुत्व कहार पढ़ा उपरे बापा माँ दियंती प्राय देखिए पुरुष जो पुओ पिलाटीर पढ़ाटा तांकर प्रथम प्राधान्य दे थांती दे गिव प्रायोरिटी टू द सन्स एजुकेशन why because education has to education serves the needs of both the boys and girls it is a need of both boys and girls so therefore they both should get education but if we talk about higher education where investment of money is required the parents always give precedence to the son's education then ei jo jinsa gudaka egudika न्यायोचित कि नुहे एथिरा ए जो मूल्यबोध एथिरे कोन रहिछि and if we want to change these practices आमे आजिर जो नूतन पीढ़ी young generation we need to discuss such customary provisions such traditions which actually do not bring equality between the two sex groups. It brings gender discrimination in the society. मु काली कहिथिली जे gender equality होची at the foundation of all our social progress and economic progress. जे पर्यंत आमर लिंगगत समता आसिनी से पर्यंत जातीय अभिवृद्धि बा आमर अर्थनैतिक अभिवृद्धि बा सामाजिक विकास असंभव अटे तेणु let this new generation in our these classes discuss that what is our practice, how far we really support this practice, what changes we need, if we need any change, what are the changes we need in the practice. So let us take up this module and find to
get away with these traditions, these customs and these ways of behavior and actions in our day to day life. And in this module actually we are going to look into how many of our gender practices are against human values. आमर मानविक मूल्यबोध उपरे आमे बहुत कहूचे किंतु प्रकृत रे मानविक मूल्यबोध कहे जे पुरुष और नारी दी जन जाक समान उभय मनुष्य केही माने उभयंक पाइका मूल्यबोध एका हबा कथा आमर मोरालिटी नैतिकता आमे जहा को कहूचु एथिक्स मोरालिटी सेगुड़िक मध्य समान हबा कथा तेणु आमर केतटा आमर जो डेली प्रथा रही आमर चलनी रही चलनी रे आमे समान को किपरि व्यवहार करू तांको आमर तांका प्रति आमर कोन एटीट्यूड रहे व्हाट इज आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स देम एंड दैट वी हैव टू रिफ्लेक्ट upon now and we have to think that whether how many of them are correct, how many of them are wrong, or if we feel they are wrong, what can we do to bring changes in them. So a module padhila pore let us hope that a new wave of consciousness will shape a new generation of girls and boys in these classrooms. आमे आज जो श्रेणी गृह रे ए जो पढ़ाऊचु एथिक्स वैल्यूज आउ women institutions and practices से श्रेणी गृह रु अंतत जो नूतन पीढ़ी रो बाहरिबे आमर शिक्षित युवक युवती बा छात्र छात्री सेमानक मन रे एक नूतन सचेतनता आसु जो सचेतनता रे सेमाने पृथ्वी रे किछि समाज रे किछि परिवर्तन आनी परिबे. They will be the change drivers of the society and they will actually make others learn that we have to protect one another. We are not separate, we are not different, we are complementary to each other, each one has to support each other, we have to cooperate together so that we can actually create a society where the rights of each individual will be protected. प्रत्येक मनुष्यर जो मानविक अधिकार निश्चिंत भाव में सुरक्षित रहिबो. एवरीवन विल गेट डिग्निटी, समस्ते मर्यादा प्राप्त हेबे एवं समस्तंकु गोटे सुखर एवं समृद्धशाली समाज आमे गठन करि परिबा. तेणु यही जो मॉड्यूलटी पढ़ला परे आमे केते गुड़िए डिजायरेबल वी विल बी looking at certain desirable gender related values. The entire discourses that have been ingrained into the module, they aim at giving certain very common gender related values. And what are these gender related values? First is to bring gender justice. प्रथमे होची लिंगगत न्याय समस्तंको दबा पाई. In many times we find the women are not given the justice because of their gender group. बहुत समय रे नारी माननको तांकर न्याय मिले नाही because जेतबेले गोटे नारी गोटे उदाहरण एठी दउची. I can give an example. You think of a remote area where there is a very limited property and the husband dies and the wife becomes a widow. At that time when there was a question of distribution of property comes, whether we give the property right to the woman after her husband or not, then the question, that is a question. So we have to, property right is a major focus in during which we will be discussing in the course of this module. So we have to give gender justice to both men and women, both boys and girls. Everyone is liable to get justice in this society. We cannot say justice is only the men are deserving of, men deserve justice and women do not deserve justice. Justice समस्तंकर न्याय दरकार. अन्याय को बरदास्त करा जाय नहीं. अनेक समय आमे नारी मानक पई अनेक गुड़िए अन्याय करिथाउ. आपण देखंतु साधारण घरे, you just think about your own home environment. Do you ever feel जे तुम घरे जो व्यवहार बापा मांकर कार्यशैली
ତାହା ତୁମର ଆଉ ତୁମର ଭଉଣୀ ପ୍ରତି ଅଲଗା କି ତୁମର ଭାଇ ପ୍ରତି ଅଲଗା କି ତେଣୁ ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଉଛେ କି ନାହିଁ। ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ କମ୍ସ ଜେଣ୍ଡର ଇକ୍ୱାଲିଟି। ଜେଣ୍ଡର ଇକ୍ୱାଲିଟି କହିଲେ ଏହା ବହୁତ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ସିମ୍ସ ଲାଇକ୍ ଅ ହାଇ ସାଉଣ୍ଡିଂ ୱାର୍ଡ। नो, इट कम्स फ्रॉम our organization, it comes from our home, it comes from the school, colleges and the higher educational institutions which we attend, then it is extended to our workplace। सबु जगारे लिंगगत समता रहिबा दरकार किंतु आमे लिंगगत समता देई पारुछु कि सबु जगारे जो आमर नारी मानंकु आमे पुरुषंकर समकक्ष करिछु एवं तांकु समान अधिकार समानता दउछु कि नाही सेटा मध्य आलोच्य वस्तु एवं आमे भाबुछु एही मॉड्यूल सरी पाठ पढ़ी सारला परे पिला माने जो जेंडर जस्टिस जेंडर इक्वालिटी बा लिंगगत न्याय लिंगगत समता उपरे निश्चिंत भाव सम्यक धारणा प्राप्त हेबे एवं दे विल नॉट ओनली कैरी इट एज इन द फॉर्म ऑफ ए नॉलेज, दे विल ट्रांसफॉर्म इट दिस नॉलेज इनटू अ प्रैक्टिस। द थर्ड इज डिग्निटी ऑफ वुमेन, मर्यादा। women should get their dignity in the society। मनीषटीए बंचापी हेले ताकू मर्यादा संपन्न जीवनटीए यापन करने पड़े तेणु मर्यादा दब किए आमे माने ही मर्यादा दऊ एवं आमे माने मध्य अमर्यादा दायी रही था। तेणु आमे मर्यादा किपरि दबा नारीटी को कौ रकम मर्यादा दिया जाई पारिबो से घरे हो किंबा बाहरे हो प्रत्येक जगार तार मर्यादा क्षुण्ण किपरि नहब ताहाकु मध्य आमे चिंता करिबा। तेणु दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन इन दिस मॉड्यूल। द फोर्थ इज द इराडिकेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सेक्स। लिंगगत कौनसी विभेदता आनिबा नारी पुरुषंक मध्य आमर जो कॉन्स्टिट्यूशन रही संविधान and the basic law of the that is the basic law of the land से कहे जे कौनसी लिंगगत बेसिस रे कौनसी आमे विविधता आनी परिबा नाही किंबा भिन्न ट्रीटमेंट आनी परिबा नाही किंतु बहुत समय रे we find gender based discrimination is embedded in every sphere of life। आमे गोटे छोट उदाहरण दउची घरे आमे जेते बळे भाईटीए भौणीटीए पुओटीए हेले समस्ते खुशी होउचंती झियोटीए हेले खुशी होउनांती सेइठु आरंभ हुए डिस्क्रिमिनेशन। जदि पुनी मातृगर्भरे भी जानी पारुचंती बहुत समय रे लोकंकर सेबेठारु दुख आरंभ हो जाए जो कन्या भ्रूण विषय रे से माने चिंता करी चलंती किपरि ताको आनिबे कि नाही पृथ्वी पृष्ठ को। सो दिस इज द डिस्क्रिमिनेशन। आपण आउ टिके आसंतु जेते बळे पाठ पढ़ा समान सुजोगर कथा उठे स्वास्थ्य शिक्षा किंबा खाद्य सेतेबेले मध्य आमे बहुत रकम डिस्क्रिमिनेशन करू तारी उपरे आमे आलोकपात करिबा। वी विल हाईलाइट ऑन देम देन वी विल थिंक whether they are the correct way to bring gender equality in the society। So while transacting this module in the class, what we will do not only between the teacher and the students, among the students you talk with your peers, you talk with your family members, you talk with your community members, you talk with the larger society। प्रकृत रे आमे ए विविधता आमे करूचे कि आमे कौनसी आर वी डिस्क्रिमिनेटिंग our children on the basis of gender or not। जदि जेंडर बेसिस रे करूचे कौन आमे प्रकृत रे कौन आमे करि परिबा जहा द्वारा कि आमे समानता आनिबा कारण आमे सेटा मध्य ए मॉड्यूल सरला परे आमे भाबुची सबो पिला माने सेथिरे सचेतन हेबे। आ रेस्पेक्टिंग एंड ऑनरिंग द ह्यूमन राइट्स ऑफ वुमेन आमे भाबु गोटे स्त्री लोकटिए मनीष नुहे तार मानविक अधिकार बोली किछि नाही। तेणु व्हाट वी डू इज दैट आमे कौन करूँ वी जस्ट लीव हर एंड आमे भाबू जे नाई तार मानविक अधिकार नाई आमे तार मानविक अधिकार ऊपर केबे सचेतन होना। वी हैव टू आल्सो रेस्पेक्ट as well as we have to become conscious conscious about giving human rights to our women। तापरे we have to recognize and appreciate the contributions of women।
मॉड्यूल बहुत जगह देखिए नारीर अवदान विषय अवतारणा कराई। वी हैव डिस्क्राइब्ड हाउ अ वुमन एक्चुअली कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द फैमिली, डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड व्हेदर वी रिकॉग्नाइज इट और नॉट। माने प्रथम जिनस होची जनकर अवदान को एक्चुअली चिंता करबा, अवदान को आमे जदि सम्मान दबा ताको आमे भाबिबा जे एटा तार अवदान, आमे बहुत संभव नारीर एटा होची ड्यूटी। ड्यूटी नुहे इन द नेम ऑफ ड्यूटी एक्चुअली वी फॉरगेट द इमेंस रोल सी इज प्लेइंग इन द सोसाइटी। तेणु आमे एथिरे मध्य चिंता करिबा जे आमे किपरि भाबरे जे तार अवदान को मध्य रिकॉग्नाइज करिबा, दैट इज वाइटल इन द सोसाइटी। एवं तार जदि अवदान रिकॉग्नाइज होउची कि नाही, जोटी हेउ नाही, केमिति आमे तार अवदान को रिकॉग्नाइज करिबा ताहा मध्य चिंतार परिसरभुक्त करिबा। देन द लास्ट वन इज डेवलपिंग कंपैशन एंड केयर एंड ऑनर फॉर वुमेन। आमे सेमानक पाइका किपरि संवेदनशीलता आनिबा, जत्न आनिबा एवं किपरि तांको सम्मान दबा। संवेदनशीलता, जत्न एवं सम्मान, दे आर कंपैशन, केयर एंड ऑनर। आमे बहुत समय संवेदनशीलतार अभाव हुए, तेणु संवेदनशीलता किपरि आनिबा सेटा चिंता करिबा। अनेक स्त्री लोकंकर बहुत समय माने आमे देखिचे सेमानकर स्वामी चली जाती किंबा कौन से असुविधा पड़ती, सेमानकर देह खराब हुए, आमे टिके तांको प्रति सेंसिटिव हवा, आमे तांकर कष्ट दुख बुझिबा एंड दे आर आल्सो एथिकल वैल्यूज। कारण आमे जदि परिवार रे गोटिए कौन सी पोषा रखुचे, गोटे कुकुरटीए रखले मध्य ता देह खराब हेले मध्य आम खराब लगे। सेहीपरि जो माने स्त्री लोक माने आम चारिपटे रही, आम सांगे चलुचंती, आमे परस्पर स्त्री लोक मानकर पुरुष लोकंक प्रति रहिबो, पुरुष लोकंकर स्त्री लोकंक प्रति रहिबो। तेणु ए जो संवेदनशीलता एवं तांकर जत्न, परस्पर जत्न नबा मध्य आमे शिखिबा। मनुष्य जे कौन स्तर रे हो, से आज गोटे आपणक जेजेबापा माँ आज बुढ़ा बुढ़ी हो जाई पारतांती, किंतु तांकर प्रयत्न बल आज आपणक परिवार एथिके आसीची। तेणु तांकर मध्य जत्न नबा, ए सब गुड़िक संबंध रे आलोचना करिबा। आउ किपरि नारी मानंकु सामाजिक और अर्थनैतिक भावरे तांको आमे आनिबा सोसाइटी भीतर को। कारण बहुत समय से माने सामाजिक स्तर रे बहुत गुड़े तांकर अवदान रही एवं अर्थनैतिक स्तर रे मध्य सेमानेकर अवदान बहुत रही, किंतु आमे ताको केबे हेले गणनार परिसर भीतर को आणुनु। आमे भाबु स्त्री लोकटे किछि करे नाही, नारीटे किछि करे नाही, किंतु तांकर अवदान को आमे किपरि भाबरे ग्रहण करिबा एवं ताको किपरि आमे परिसर गणनार परिसरभुक्त करिबा ताहा पर मध्य चिंता करिबा। तेणु जेबे जाई विकासर धारारे किछि परिवर्तन आसीबो एवं आमे देखिबा समाजर द्रुत विकास घटिबो। आउ ए जो आमर रहिला जो ए मॉड्यूल ले आमे कोन कोन पढ़िबा, यार जो सब यूनिट रहिछि, आई जस्ट वांट टू स्पेल आउट सम ऑफ द सब यूनिट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल। द फर्स्ट वी विल बी स्टडीing about women and family, and then secondly women and work, then third is women, community and society, the fourth one is women and property rights that we will be studying. So in women and family एथिरे सबु करा जाई पारि नाही, जेतक broad things, particularly ethics and values, actually as I have told you, it is a self study course and it is a course where you will bring your experience into the class and take the classroom discussion into your everyday activity. तेणु तुम्हें तुमर अनुभव को लेकर चिंता कर पिला माने, तमें जानी परिबो जे कोठी कोठी आमे कोन करूचे। तेणु किछिटा माने अनुष्ठान रो एवं किछिटा प्रथार माने बा प्रैक्टिस बा चलनी रो एठी अवतारणा करा जायछि। We have brought into the discussion
where you can at least get to understand they have been taken from your contextual side, and therefore you can easily contextualize the discussion and you can give your own well defined ideas on it. Then women and family, we are talking about women and family. What we will do, that the first is prenatal sex selection. आमे रखीचु कौन कौन रखीचु ता भितर पुणी मु कहूची प्रीनाटाल सेक्स सिलेक्शन एटा डिटेल आमर आलोचना हबो. वी विल डिटेल डिस्कस इट इन डिटेल. प्रीनाटाल सेक्स सिलेक्शन है मातृगर्भरे गोटे पिला थिला बेले ताहार लिंग निरूपण आईनीतः यह संपूर्ण रूपे होची एक अपराध. इट इज नॉट अलाउड टू गो फॉर प्रीनाटाल सेक्स सिलेक्शन, बट till now we go for prenatal sex selection. That shows our gender bias. It is not, we are never doing that to look at the health of the baby, but we are going to look at that to decide the fetus of the baby. And many times you find that a child, if it is a fetus is of a girl child, then the parents also kill the girl child in the mother's womb. ताको पृथ्वी पृष्ठ को आनिबा आगुरु प्रथमे ताको हत्या करा जाए. एंड क्राइम, इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, आई विल टेल यू. आउ सेही विषय रे एथरे आलोचना करा जायछि. कारण आज आमे जदि देखुचे आमे डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो देखुचे, भारतर जनगणना रे आमे देखुचे नारी मानकर संख्या कमी कमी जाउछि. दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, because this is not a good trend for a society. A balanced society should have at least a very nearing number of men and women, but it is declining in our society. And there is again, ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିଥିବ ବହୁ ସମୟରେ ବାପା ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ପାଇଁ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଥାଏ. ଦ ସନ୍ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଆକ୍ଚୁଆଲି takes you for prenatal sex selection. Kintu jodi mankind or survival, if we look at the survival of mankind, if we won't have girls, then who will protect this society? Who will actually give the new members to the society? How the generations will actually grow? Tenu prenatal sex selection ta achi prathame jaha upare ki विस्तृत भावरे आमर आलोचना करा जिवो, and we will discuss it elaborately, and we will give you very good stories over here. Those who will teach in your class, they will be giving very good stories, and they will be showing you some movies also, and where you can initiate the discussion on them. The second I will be coming to the second part.